Assalamu alaikum students. Today our lecture will be on sets. आज हम फिर सेट पे कुछ लेक्चर करने वाले हैं. So first of all कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिमाइंड करने की है यहाँ आपके माइंड में रहनी चाहिए. So it will be in your mind. So first of all कि if A is a set n of A या number of elements in set A, this means number of elements in set A. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें इफ ए द सेट, हमारे पास एक सेट है ए सम काइंड की, उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 4. ठीक है. और एक और बात भी शुड बी इन योर माइंड, आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए स्टूडेंट्स. तो इट्स दिस की when you are using Venn diagram to solve a problem, you can write the number of elements in the subsets rather than filling in all the elements. So what that means now? So it's कि अगर हमारे पास सेट है, तो अगर A हमारे पास एक सेट है और ये दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, तो हम क्या करेंगे कि मतलब कि अब A देखें तो A इज अ सेट व्हिच इज अ सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट. तो हम जो A के एलिमेंट्स होंगे वो A ही के पार्ट में ना, मतलब वो लिखेंगे हम ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सबसेट्स, उसी पार्ट में ना हम जस्ट राइट करेंगे. जिस तरह ए अगर हमारे पास सेट है ए बी और यूनिवर्सल सेट हमारे पास है ए बी सी, तो ए जो होगा वो ए और बी सेट ए में आ जाएंगे, बाकी जो सी होगा वो बाय हो जाएगा. दैट मीन्स दिस. नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ वेन डायग्राम. वी हैव some problem and we have to solve it. First we write the problem. I used to write the problem is because when we are writing the problem, then it's basically we are understanding the problem in that time. So it consumes time, but it helps a lot. Problem solving with Venn diagram. ठीक है. वो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? फर्स्ट वी विल राइट द प्रॉब्लम के एग्जाम्पल
एक हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, to solve that there are 32 students in a class. They can choose to study history. उसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे. सो देर आर 32 स्टूडेंट्स इन द क्लास. टोटल जो है वो 32 स्टूडेंट्स हैं और दे कैन चूज टू स्टडी हिस्ट्री, और उसके अलावा हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, इट्स कैपिटल जी, और बोथ, या दोनों, और नीदर, या कोई भी नहीं. So basically we have two sets. It's a set of a history subject and the set of a geography. History subject set H और geography set it's G. ठीक है. And we have 18 जो students हैं study history, और 20 जो है वो करते हैं study geography. And 8 जो है 8 students study both history and geography, basically both subjects. ये 8 स्टूडेंट्स जो है वो बोथ सब्जेक्ट स्टडी करते हैं. सो व्हाट द क्वेश्चन, कि हमारे पास फाइंड क्या करना है, या क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ अ वेन डायग्राम. Venn diagram to show this information. फर्स्ट हमने क्या वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया. सो लेट डू द फर्स्ट क्वेश्चन ना. पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं. Solution, we have some kind of this kind of a diagram. It's a universal set. It's a subject, the students will study the subject history, and now we have the students which study geography, G, it's capital. So the students which study history, it's just only it's not just only study history, it's total history. Means not only history. There can be, so what I'm saying, so let's first of all we write the study both history and geography. The when we are saying study both history and geography, it means it lies in the intersection. It means कि number of elements in uh, number of elements in history intersection geography is equals to 18. Oh, sorry, I mean it's 8. So it's 8 here. But when we're saying study history, so it's complete set. I mean it's complete set. So when if we want to find the number of elements in
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जस्ट हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, सो वी हैव टू 18 माइनस 8, so it becomes 10. 10 students who study history. So when you will add 10 plus 8, it will give you 18. The students which study history, but there should be some mix of with the geography, but we are not counting here. No? We are counting those also in there. So when we are saying study geography, it means कि complete set of G represent the geography. So if we want just only geography students, the students who study only geography subject, so we have to minus 20 minus 8, so it will give us 12. The students who study only geography subject, those are 12. When you add these 10 plus 8, 10 plus 8 plus 12, that will become 30. But we have total 32 students now. So uh, so there might be there are two students which are out of these sets, H and G, out of these sets. So let's see if the representation, I think it's a complete representation of 18 study students study history, and 20 20 study geography, and 8 study both history and geography. So it's the complete Venn diagram for this part A. So we have second part B. What part B says, find the number of students who study neither history nor geography. So neither history nor geography. तो वो पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे हमें बताएं कि जो स्टूडेंट्स जो ना हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, so it will out of these sets, from H, from G, so it lies in this, no? These are two, basically two students who study uh, neither history nor geography. So these are the students are two. I will say two students who study neither uh, history nor geography. Uh, I think that's the end of this question. So we will start next question. For so basically we have total 32. If in a mathematically अगर मैं लिखना चाहूँ, mathematically we have total 30 total students जो है वो 32 हैं, और 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टडी बोथ, मतलब कि ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. So 32 minus 30, it will become 2. हमारे पास, so the number of students who study
neither history nor geography is 2. So, 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 two students who study neither history nor geography. That means कि in a physical sense, we are out of these sets. I think that's fine for this part. If you like it, like, subscribe, and share it. Allah Hafiz.